So students, let's discuss about amniotic fluid. So amniotic fluid क्या होता है? It is a fluid around the fetus. तो इसका क्या फंक्शन होगा? अगर ये फ्लूइड बच्चे के अराउंड प्रेजेंट होगा तो इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है. ये क्या करता है? ये फीटस का कंप्रेशन नहीं होने देगा बाय द यूट्राइन वॉल. सो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर टू द फीटस. सो राइट, it is a fluid present around the fetus and it serves as cushion, or you can say as a protective factor for the fetus. सी, ये जो एमनोटिक फ्लूइड होता है ना, इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, ठीक है. ये कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता बेबी. सो जस्ट राइट इट डाउन. इट हैज नो न्यूट्रिटिव और न्यूट्रिशनल वैल्यू. ओके. नाउ ये जो एमनोटिक फ्लूइड होता है ना, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे. लाइक व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड. अभी ये कहाँ से आएगा? सो व्हाट आर द सोर्स? अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी की बात करें, अर्ली प्रेगनेंसी से मेरा मतलब है अप टू 7 वीक्स. सो इन अर्ली प्रेगनेंसी, लाइक अराउंड 7 वीक्स और अप टू 7 वीक्स, जो सोर्स है एमनोटिक फ्लूइड का, दैट इज व्हाट? दैट इज फ्रॉम द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा. ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा. ठीक है. मेनली डिफ्यूजन होगी तो उससे हमारे पास क्या आएगा? एमनोटिक फ्लूइड आएगा. ठीक है. नाउ आफ्टर 7 वीक्स, और यू कैन से 7 to 20 वीक्स में क्या सोर्स होगा एमनोटिक फ्लूइड का? सो इट इज मेनली द फीटल स्किन. सो फीटल स्किन से डिफ्यूजन होगी तो वहां से हमें क्या मिलेगा? एमनोटिक फ्लूइड. सो डिफ्यूजन ऑफ fetal skin is the main source after 7 to 20 weeks में amniotic fluid. Now after 20 weeks, what is the source? After 20 weeks, fetal urine is the main source. Fetal urine. ठीक है. See, जनरली जो फीटल यूरिन है वो कब बनना शुरू हो जाएगा? दैट स्टार्ट्स अराउंड 12 वीक्स. बट जो एमनोटिक फ्लूइड है, फीटल यूरिन कब बनाना शुरू? बट फीटल यूरिन कब मेजर सोर्स बनेगा एमनोटिक फ्लूइड का? दैट इज अराउंड 20 वीक्स. ओके. सो जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ व्हाट इज द pH ऑफ दिस एमनोटिक फ्लूइड? So basically if we talk about the pH, it is around 7 to 7.4. ये बेसिक होता है. ठीक है. एल्कली होता है ये. It is alkaline in nature. Okay. Now what is the turnover? If they ask you what is the turnover of amniotic fluid, so what is your answer? That is 500 cc per heart. Okay. Now we'll discuss about the circulation of amniotic fluid. Now amniotic fluid बना, अभी वो कैसे रिमूव कैसे होगा? ऐसा तो नहीं एक बार बन गया तो वो चलता ही रहेगा, नहीं. So what is the source of removal of amniotic fluid? Source of removal, that is swallowing. The process of
स्वेलिंग, बेबी क्या करेगा, एमनोटिक फ्लूइड को स्वेलो करेगा और उसको रिमूव करता जाएगा, swallowing. Now if they ask you what is the source of production, obviously you know it is the urine. Source of production, that is fetal urine. Okay, now ये जो एमनोटिक फ्लूइड है ना, ये हर 24 घंटे में रिप्लेस होता है. सो राइट इट डाउन हियर, entire amniotic fluid changes after 24 hours. Okay, now what is the maximum amount of amniotic fluid? See, maximum amount is 1 liter. ठीक है, और ये मैक्सिमम अमाउंट कब मैक्सिमम होगी, at 32 to 34 weeks this will be maximum. Amniotic fluid will be maximum at 32 to 34 weeks. बट अगर सिंगल बेस्ट आंसर आप पूछो तो 32 वीक्स इज अ बेस्ट आंसर. ओके, नाउ उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 34 वीक्स दिस एमनोटिक फ्लूइड, सो आफ्टर 32 टू 34 वीक्स क्या होगा, जो एमनोटिक फ्लूइड है ना, इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. सो एट 36 वीक्स एमनोटिक फ्लूइड कितना होगा, कितनी अमाउंट होगी. नाउ 36 वीक्स के अराउंड कितना होगा इसका अमाउंट, दैट इज अराउंड 900 ml. एंड आफ्टर दैट एट 40 वीक ये और डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब ये, इट विल बी अराउंड 800 ml. एंड एट 42 वीक्स ये और ज्यादा कम हो जाएगा, अब कितना होगा ये, 200 ml. सो सी, कैन यू क्लियरली अप्रिशिएट कि ये कुछ 34 के बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया. नाउ जैसे ही एमनोटिक फ्लूइड कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी मोर रिस्क और एंड कॉम्प्लिकेशन, देयर विल बी मोर कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द composition of amniotic fluid, so normally ये ज़्यादातर water से ही बना होता है. Around 99% amniotic fluid is made up of water. Okay, 1% it is having solid inorganic material. सॉलिड इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आयंस, ये सारे आते हैं. सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन आयंस. देन इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि व्हाट, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन. urea, uric acid and creatinine. Okay, so this is the composition of the amniotic. Now अब amniotic fluid की assessment के लिए हम क्या करेंगे, we will do ultrasound. Ultrasound assessment of amniotic fluid. Now see, असेसमेंट के लिए एमनोटिक फ्लूइड के असेसमेंट के 2 पैरामीटर्स होते हैं, और वो क्या पैरामीटर्स है, फर्स्ट वन इज एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड द सेकेंड पैरामीटर इज व्हाट, दैट इज, या इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज वर्टिकल पॉकेट. ओके, और यू कैन राइट इट एज लार्ज वर्टिकल. STP stands for what? Single
deep. Okay, now see. This is the uterus, okay, or here baby is there. Okay, now amniotic fluid index कैसे आप कैलकुलेट करोगे? जर्नली यहाँ पे हम इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेंगे. फर्स्ट विल डिवाइड दिस इनटू 4 quadrants. ठीक है, this is quadrant 1, this is quadrant 2, this is 3 and this is 4. Now amniotic fluid index is equal to sum of all quadrants. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to what? Amniotic fluid index. For example, first quadrant में 2 to like 3 centimeter था amniotic fluid, second में it's 5, third में it's 4 centimeter and fourth में it's 7 centimeter. So you will plus all this 3 plus 5 plus 4 plus 7, that will be your amniotic fluid index. Now if we talk about the single deep pocket or large vertical pocket, so this is basically पूरी entire uterus में कितना amniotic fluid है, we called it as SD. Okay, so right here it is actually amniotic fluid present in entire uterus. Okay, so जो SDP है इसकी वैल्यू कितनी होती है नॉर्मली इट इज 2 to 8 सेंटीमीटर. ठीक है, इफ it is more than 8 centimeter, we called it as polyhydram. If it is more than 8 centimeter, called it as polyhydramnios. If it is less than 2 centimeter, then we called it as what? Oligohydramnios. Now, जो normal value है AFI की, that is amniotic fluid index, that is what? That is around 5 to 24 centimeter. If it is more than 24, we called it as polyhydramnios. And if it is less than 5 centimeter, we called it as oligohydramnios. Okay, so this is about the ultrasound assessment of amniotic fluid. Now let's discuss about what are the causes of polyhydramnios. So ठीक है, polyhydramnios. सी, अब क्या क्या कॉज हो सकते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस के? या तो एमनोटिक फ्लूइड की स्वेलिंग कम है, या फिर उसकी प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है, फीटल यूरिनेशन ज़्यादा होगी. सो व्हाट आर द रीजन ऑफ दीज टू कंडीशन विल डिस्कस. फर्स्ट क्या है, स्वेलिंग कम हो रही है, एंड सेकेंड इज देयर इज मोर urination. These two situation is causing polyhydramnios. Now we'll discuss कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें स्वेलिंग कम होती है. डिक्रीज स्वेलिंग कब होगी? Here first condition is what? That is anencephaly. Anencephaly. Okay. Second is if there is a
क्लेफ्ट पैलेट, अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो ऑब्वियसली स्वेलिंग कम होगी। थर्ड वन इज व्हाट, दैट इज ड्यूडेनल अट्रेसिया, duodenal atresia. Fourth one is what, that is tracheoesophageal fistula, tracheoesophageal fistula. Fifth factor is what, that is diaphragmatic hernia. So these are the causes that cause what, decrease swelling of amniotic fluid. Okay, now we'll discuss about the condition where there is an increased urination. So first one is fetal anemia. Now see, fetal anemia में क्या होगा, there will be more cardiac output. Cardiac output ज़्यादा होगा, cardiac output ज़्यादा हुआ तो obviously there will be more urination. So eventually there will be what, more urination. Second condition is what? Second is if there is a maternal diabetes. So maternal diabetes. Maternal diabetes में क्या होगा, mainly बेबी में ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हो जाएंगे, तो ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो इट विल लीड्स टू पॉलीयूरिया. डायबिटीज में मेनली क्या होता है, आइदर तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा, आइदर तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा. इंसुलिन कम होगा तो भी मदर में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, और वो जो ग्लूकोज है दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू बेबी. एंड अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो क्या होगा, हाइपर इंसुलिनिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया. अभी इंसुलिन तो ट्रांसफर नहीं होगा, मैटरनल इंसुलिन कभी भी बेबी में ट्रांसफर नहीं होता, ओनली ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्ट. सो ऑब्वियसली मोर ग्लूकोज देन देयर विल बी पॉलीयूरिया. थर्ड इज व्हाट, दैट इज बार्टर सिंड्रोम. बार्टर सिंड्रोम में भी मेन क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा. ठीक है, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. सो जस्ट रिमेंबर इट इज अ किडनी डिसऑर्डर. सो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी पॉलीयूरिया एंड दैट लीड्स टू व्हाट, पॉलीहाइड्रोमिया. नाउ we'll discuss about the causes of oligohydramnios. Oligohydramnios. Okay. So here, what is happening? Amniotic fluid is decreasing. So ये क्यों हो रहा है? The first reason is that is renal agenesis. Yeah. Second is what? That is polycystic kidney disease. See, अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी तो क्या यूरिन आउटपुट होगी? नहीं होगी. तो अगर यूरिन ही नहीं आ रहा तो कहाँ से एमनोटिक फ्लूइड होगा? सो ओलिगोहाइड्रोमनियोस के टू सिचुएशन हो सकती है, आइदर डिक्रीज यूरिन आउटपुट और सेकेंड इज मोर swallowing. So urine output कब कम होगी? When there will be renal agenesis. Second reason of this is what? That is posterior urethral valve. Generally decreased renal blood flow आपको कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? That is in case of utero-placental insufficiency. ठीक है, तो अगर renal blood flow कम है तो क्या होगा, जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी कम होगा, तो देयर विल बी ओलिगोयूरिया.
there will be what? Oligouria will. Then there are certain drugs that cause oligohydramnios. Here, the first one is ACE inhibitor. ACE inhibitors. Then, what is the other drug? That is indomethacin. Indomethacin. Indomethacin क्या करेगा? This will stimulate the fetal production of arginine, ठीक है, and vasopressin. और आपको पता है vasopressin क्या है? It is anti-diuresis. So indomethacin क्या करेगा? This will stimulate the fetal production of arginine and vasopressin, and you know this is what? This is anti-diuresis. ठीक है, so that eventually leads to what? That is oligohydramnios. Then the next condition is what? That is triploidy. Triploidy, यहाँ पे you can say trisomy. और कौन सी वाली ट्राइजोमी मेनली? दैट इज ट्राइजोमी 30. क्यों बोला? बिकॉज इसमें इन केस ऑफ ट्रिप्लॉइडी और ट्राइजोमी व्हाट यू गोना फाइंड? देयर विल बी रीनल इम्पेयरमेंट. देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी रीनल इम्पेयर, जिसकी वजह से देयर विल बी ओलिगोहाइड्रोम. ओके, देन next factor that causes oligohydramnios is amnionodoso. Amnionodoso. Amnionodoso में क्या होगा? वहाँ पे nodules बन जाते. There will be formation of nodules on the amnion. एमनियन, जिसकी वजह से क्या होगा? जो भी एमनोटिक फ्लूइड था वो इस नोड्यूल्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एमनोटिक फ्लूइड जो कैविटी में है कम होगा. तो दैट्स व्हाई इट कॉजेस ओलिगोहाइड्रोम. सो देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ amniotic fluid in the nodules. Next reason is PROM, that is premature rupture of membrane. तो obviously अगर membrane पहले ही rupture होगी तो सारा amniotic fluid निकल जाएगा and this will cause oligohydramnios. Now we'll discuss what are the investigation you gonna do for the diagnosis of polyhydramnios and oligohydramnios. So just make a column polyhydramnios and oligo. Now what investigations we gonna do? So see, here first we will see the anomalies. You can go for USG. So हम पहले क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करें. ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे हमने बोला कि कुछ एनोमलीज होती हैं दैट कैन कॉज पॉलीहाइड्रामनियोस एंड ओलिगोहाइड्रोम. तो अल्ट्रासाउंड पे यू कैन सी वेदर इस बेबी में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं, या कोई जीआईटी प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई जीआईटी दिक्कत तो नहीं. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एनेन्सेफेली हो सकता है. ठीक है, और जीआईटी में क्या? ड्यूडेनल अट्रेशिया यू कैन रूल आउट बाय डूइंग द अल्ट्रासाउंड. ठीक है, नाउ अगर अल्ट्रासाउंड में कोई एनोमली प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे?
then you will look for any chromosomal abnormality. So if anomaly present, then what you gonna do? Look for chromosomal abnormality. ठीक है? Now then देख लो अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं है. ठीक है, अगर नहीं है तो उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल रूल आउट व्हाट? डायबिटीज मेलाइटस इन द मदर. After that you will rule out diabetes mellitus in mother. Then you can check for fetal anemia. ठीक है, fetal anemia के लिए you can check कि इसमें हाई कार्डियक आउटपुट है कि नहीं. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फीटल एनीमिया को आप बेस्ट वे क्या है फीटल एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए? दैट इज मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर. मिडल सेरेब्रल आर्टरी का जब डॉपलर करोगे ना तो व्हाट यू गोना फाइंड? देयर विल बी इंक्रीज पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी. कितनी थी वो? इट इज मोर देन 1.5 medians of beat. That is more than 1.5. Okay. हमने already discuss किया था what are the reasons of fetal anemia. So the first reason is that is parvovirus B19 infection. Then second was RH incompatibility. So these are the two reasons that causes the fetal anemia. And fetal anemia अगर है तो क्या होगा? It can cause what? Polyhydramnios. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. एंड दिस एनीमिया कैन लीड्स टू व्हाट? दैट कैन लीड्स टू हार्ट फेलियर इन द fetus. हार्ट फेलियर, इट लीड्स टू हार्ट फेलियर. ओके, सो फीटल एनीमिया एक छोटी कंडीशन ही है, इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. देन सी, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है ना तो भी यू विल फाइंड व्हाट? पॉलीहाइड्रोमियस. ठीक है, दो बच्चे हैं तो ऑब्वियसली यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा तो देयर विल बी मोर एमनोटिक फ्लूइड. सो ट्विन प्रेगनेंसी इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर. नाउ what are the investigation you will do for oligohydramnios? Same. First you will do the USG, that is ultrasonography. अल्ट्रासोनोग्राफी पे आप कोई भी एनॉमली रूल आउट करोगे, जैसे कि रीनल एजेनेसिस हो गया या पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व. सो रूल आउट एनॉमली like what? Like renal agenesis or posterior urethral valve. अगर कोई एनॉमली प्रेजेंट है, so if it is present, then what is your next step? Look for chromosomal abnormality. Okay, this step is same as we have did in the polyhydramnios. Then after that chromosomal abnormality check करोगे आप. उसके बाद you need to rule out the rupture of membrane. Rule out rupture of membrane. जैसे कि we have already discussed, PROM is a risk factor for oligohydramnios. ठीक है. So next, first you have to look for chromosomal abnormality. Now second thing what you have to do is you have to rule out the rupture of membrane. So you have to rule out a rupture of membrane. Now
sometimes you're gonna see there will be late onset oligomenorrhea. Late onset से मेरा क्या मतलब है? In the third trimester, or you can say in the late second trimester. So late onset oligomenorrhea, इसमें क्या होगा? लेट ऑनसेट में ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंट. ठीक है, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के लिए हमने क्या बोला था? हम कैसे डायग्नोस करेंगे इसको? बाय अम्बिलिकल आर्टरी ड्रॉप. गॉट इट? नेक्स्ट you have to check for torch infection. ठीक है, so in this manner you have to rule out each and every condition and then you can make the diagnosis of oligo or polymenorrhea. Then next thing is you can make a diagnosis clinically as well. ठीक है, how you have to diagnose this clinically? Clinical diagnosis. See, first check for the fundal height. Is it appropriate for gestational age or not? Okay. See, if the fundal height is more than the gestational age, then ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? फंडल हाइट ज्यादा है जेस्टेशनल एज से, that is in case of polyhydramnios. So in case of polyhydramnios, जो फंडल हाइट है वो ज्यादा होती है देन द जेस्टेशनल एज. बट अगर हम ओलिगोहाइड्रोमनिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? फंडल हाइट कम होगी देन द जेस्टेशनल एज. ओके, नाउ ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे फंडल हाइट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी? एक तो पॉलीहाइड्रोमनियोस है, और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? सो अदर कंडीशंस, इसमें फर्स्ट कंडीशन आती है दैट इज रॉन्ग डेट. फॉर एग्जाम्पल फीमेल को पता ही नहीं कि उसकी कौन सी डेट, लास्ट पीरियड उसको कब आए थे, तो उसकी वजह से आपने जो पीओजी है वो आप गलत कैलकुलेट कर सकते हो. सो रॉन्ग डेट्स. सेकेंडली, इफ जो ब्लैडर है वो फुल हो तब, इन केस ऑफ फुल ब्लैडर. ठीक है. थर्ड इज इन केस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी. In case of molar pregnancy, there will be more fundal height than the POG. Next, multifetal pregnancy. क्या कह सकते हो? ट्विंस हैं या 3 बच्चे हैं, तो in that case there will be fundal height is more than the gestation. Okay. Then abruption के केस में भी the fundal height will be more than the POG. Okay. One more, that is fibroid uterus. Because uterus में mass सा होगा तो obviously उसकी fundal height ज़्यादा होगी than the gestational age. Now, if we talk about the other condition जहाँ पे fundal height कम हो, वो कौन कौन सी condition है? First is IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. अगर बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही तो उसमें भी फंडल हाइट जेस्टेशनल एज को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करे, तो फंडल हाइट विल बी लेस देन द जेस्टेशनल एज. सेकेंड इज मिस्ड अबॉर्शन. थर्ड वन इज obviously wrong dates. Okay. Next reason for decreased fundal height is what? Transverse line. Okay. So this is about the clinical diagnosis of oligo and polyhydramnios. Now we'll discuss about the complication of these conditions. So first let's discuss about the complication of
Oligohydramnios. Oligohydramnios. Okay. So here, first complication is what? That is pulmonary hypoplasia. Pulmonary hypoplasia. नाउ एमनोटिक बेंड सीक्वेंस क्या है? यहाँ पे जो एमनियन होती है ना, दैट रैप अराउंड द फीटल पार्ट, एंड इसकी वजह से क्या होगा? एम्पुटेशन हो सकता है. सो जस्ट रिमेम्बर. और ये दोनों जो है, पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया एंड एमनोटिक बेंड सीक्वेंस, दिस इज एक्चुअली द अर्ली कॉम्प्लिकेशन. दिस इज व्हाट? दिस इज द अर्ली कॉम्प्लिकेशन. अर्ली कॉम्प्लिकेशन से मतलब up to what week? Up to 30th week. Then what are the late complications? Late complication. So late में जो first complication है, that is what? Meconium aspiration syndrome. This is the most common late complication of oligohydramnios. ठीक है? क्या है? Meconium aspiration syndrome. Late से मेरा मतलब more than 30 weeks. Okay. Second is, that is club foot. Club foot deformity can occur because देखो, अगर एमनोटिक फ्लूइड कम है तो क्या होगा? जो बेबी के पैर है उसका कंप्रेशन हो जाएगा, एंड दैट कंप्रेशन ऑफ द फीटल पार्ट्स कैन लीड्स टू व्हाट? क्लब फुट डिफॉर्मिटी. ठीक है. नाउ हाउ यू गोना मैनेज दिस पेशेंट? मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट के लिए, सी, according to the situation you have to manage. According to the cause, what is the cause of oligohydramnios, you have to manage the patient. But if the USG show severe compression of the fetus, then you need to do what? Amniotic cut. Repeat. Then in that case, you need to do amnion transfusion. Okay. So write down, if USG show symptoms of compression, fetal compression, then in that case what you need to do? Amnion transfusion. Okay. और क्या होता है? This is nothing but the normal saline at the body temperature. You need to transfuse to the patient. Okay. Now what is the complication of polyhydramnios? Complication of poly. So the first complication is what? Respiratory discomfort. Second complication is preterm labor. Third complication is PROM. So if ज़्यादा fluid है तो obviously उससे respiratory discomfort तो होगा. Secondly, preterm labor क्यों? क्योंकि ज़्यादा fluid है, it will exert pressure and क्या होगा? There will be early delivery. Fourth complication can be malpresentation. Fifth complication is cord prolapse. Sixth complication is what? Abruptio placenta. See, पॉलीहाइड्रोमनियोस की वजह से क्या होगा? प्रॉम हो सकता है. अगर प्रॉम हुआ तो क्या होगा? यूट्राइन कैविटी में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट. सो जब ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा? जो प्लेसेंटा है ना, वो अपनी वॉल से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस विल लीड्स टू व्हाट? एब्रप्शो प्लेसेंटा. This can even leads to what?
postpartum hemorrhage as well. So these are the complications of polyhydramnios. Now obviously you have to manage the situation accordingly, according to the cause of polyhydramnios. But if there is a severe respiratory discomfort, then you need to do amniocentesis. In case of severe respiratory discomfort, what you need to do, that is amniocentesis. Okay. Next, you can also give indomethacin. इंडोमेथासिन, हमने बोला था जो इंडोमेथासिन है वो क्या करेगी, इट विल स्टिमुलेट द आर्जिनिन एंड वेसोप्रेसिन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी डायूरेसिस. ठीक है, तो इंडोमेथासिन यू कैन यूज, मेनली कब यूज करोगे, बियॉन्ड 32 वीक्स. पहले क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज अगर इंडोमेथासिन आपने पहले दे दी तो इट विल लीड टू द क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस एंड वी डोंट वांट इट. ठीक है, सो आफ्टर 32 वीक्स यू कैन गिव इंडोमेथासिन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस. इफ दे आस्क यू व्हाट इज अ नॉर्मल कलर ऑफ एमनोटिक फ्लूइड, सो जनरली जो एमनोटिक फ्लूइड होता है ना, दैट इज कलर टू कलरलेस. यूजुअली इट इज कलरलेस. एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है, इट कैन वेरी फ्रॉम कलर टू कलरलेस. ओके, सो सी एट टर्म, इफ दे आस्क यू एट टर्म व्हाट इज द कलर ऑफ एमनोटिक फ्लूइड, सो इसका कलर कैसा होता है, इट इज अ स्ट्रॉ कलर. इट इज स्ट्रॉ कलर. स्ट्रॉ कलर क्यों होगा, ड्यू टू वर्निक कैसियोसा. ड्यू टू वर्निक्स कैसियोसा. ये क्या होते हैं, these are actually fetal skin flakes. These are what? These are fetal skin flakes. Okay. Now, if there is a RH incompatibility, in case of RH incompatibility, तो RH incompatibility के केस में इसका कलर कैसा होगा, इट इज व्हाट, इट इज गोल्डन येलो. गोल्डन येलो. गोल्डन येलो क्यों होगा, ड्यू टू bilirubin. Due to bilirubin it will be golden yellow in color. Now in case of any infection like listeria infection, in case of breech presentation, and in case of transverse lie, in case of transverse presentation, जो एमनोटिक फ्लूइड का कलर होगा दैट विल बी ग्रीन इन कलर. गॉट इट. लिस्टीरिया इन्फेक्शन, ब्रीच प्रेजेंटेशन और ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में एमनोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा. अगर हम बात करें एब्रप्शियो प्लेसेंटा की, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, सो इस केस में कैसा कलर होगा एमनोटिक फ्लूइड का, इन दिस केस इट विल बी डार्क कलर. डार्क कलर. क्यों डार्क कलर्ड होगा, ड्यू टू थ्रोम्बोप्लास्ट. ड्यू टू थ्रोम्बोप्लास्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट, in case of intrauterine demise, in case of intrauterine demise, कैसा कलर होगा इस केस में, it will be tobacco color. tobacco. और ये भी क्यों होगा, because of increase thromboplast. Okay, so just remember these two conditions,
एब्रप्शो प्लेसेंटा एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइस इसमें डार्क कलर्ड होगा एंड दैट विल बी बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिक. नाउ in case of post-term pregnancy means after 42 weeks. post-term मतलब क्या? after 42 weeks. post-term pregnancy में कैसा कलर होगा? it will be greenish yellowish in color. greenish yellow color. greenish क्यों? because of meconium and yellow is the main color of amniotic. So basically हम इसको कैसा कलर बोलेंगे? it is saffron color. saffron amniotic fluid is seen in case of post-term pregnancy. So these are about the color of amniotic fluid. So this is all about amniotic fluid. I hope you guys like this video. So thanks for watching.